Good morning, students. Today we will discuss liquids. As before starting the concept of liquid, let me understand what is the meaning of hydrostatic. As hydro, that is related with the fluids, that is liquids and gases. So fluid at rest condition, these are taken as hydrostatic. That means hydrostatic, it is a branch of physics which deals with fluids at rest. If we talk about fluid, why the term fluid has been used? Fluid is a name, that is fluid. सबसे पहले समझने का पॉइंट ये है कि इसको लिक्विड कैटेगरी में भी आ सकता है एंड गैसेस भी हो सकता है. यानी द मैटर that begins to flow when some force is applied. Yani liquid and gases have a property to flow. So fluid that we are taking, that is including both these. Now hydrodynamics. Hydrodynamics, it is the branch of physics which deals with fluids in motion. Now so here we are studying liquid. Basically in this part we will study first of all liquids at rest and then liquid in motion. So for it, first of all I will take one example that whenever liquid is contained in any of the container, it will exert force on the surfaces. Now when liquid is contained in a container, so we will talk about liquid in equilibrium. To understand this liquid in equilibrium, we will just take its theoretical concept. Let me take that this is a container in which liquid is there. Suppose an object is submerged in a liquid. This liquid is at rest. So when this object is submerged in the liquid will exert a force on the surface of this object, where it is in contact with the liquid. यानी liquid इसके ऊपर कोई force लगाएगा. So which is always normal to the surface of object. अब इसको समझने के लिए हम ये लेते हैं, let F be the force exerted by this liquid on the surface of object. हालांकि हम कह रहे हैं कि लिक्विड हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और इक्विलिब्रियम का स्टेट लेने के लिए हम लेते हैं कि मान लो लिक्विड, ये जो लिक्विड है इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाता है किसी एंगल पर थीटा पर. द लिक्विड इज एक्सर्टिंग अ फोर्स F ऑन द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट. सो नाउ अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इट विल गिव रिएक्शन फोर्स. Reaction will be equal in magnitude but opposite in direction. So now we will resolve this force. So this is the horizontal component. This is F cos theta and this is F sin theta. As we are saying liquid is in equilibrium, it means liquid is not in motion, it is at rest. लेकिन अगर हम ये फोर्स लेके चल रहे हैं और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया F cos थीटा, तो इट मीन्स दैट दिस कंपोनेंट में enable the liquid to be in motion, but actually liquid is in equilibrium. Basically we are just discussing the condition. So as we are saying the liquid is at rest, so it means there is no component of force that is acting along the direction, along this horizontal direction. So it means this F cos theta must be 0. So if we take it separately, force तो exist कर रहा है, force cannot be 0. Liquid will exert some force on the object. It means this cos component can be 0, and this is possible only when this angle applied, this is 90 degree. So what does we conclude directly? This angle is 90 degree. It means जो liquid is surface पे force लगा रहा है, that is always perpendicular to the surface. In any direction when it is acting, this force is perpendicular to the surface. So this is a main point. So when you have been asked, state the condition of liquid in equilibrium, that liquid will exert a force perpendicular to the surface of the object. So this normal force exerted by liquid at rest
This is called thrust of liquid on that surface, right? So now after this, as we have taken the concept of thrust, now we will introduce pressure of liquid. Pressure, as we understand the basic concept of pressure, what we say that the normal force means thrust exerted by liquid at rest per unit area. You can just define it as normal force exerted by liquid at rest per unit area. Normal force per unit area. Already we are aware of this formula only. So this is your pressure of liquid. More will be the area, less will be the pressure. Less will be the area, more will be the pressure. And its unit is Newton per meter square, and or you can also take it as PA, Pascal. This pressure itself is a scalar quantity. We have already explained it. Now applications of pressure. First of all, as we know that pressure is force per unit area. So first example which we are taking, already we are aware of these examples because in class 9th we have already done this concept as bags and suitcases. These are provided with broad handles. या बैग्स की जो ऊपर की स्ट्राइप्स होती हैं जिससे हम उसे होल्ड करते हैं शोल्डर के ऊपर, दीज आर ब्रॉड. वाई, व्हाट इज द पर्पस? क्योंकि देखिए बेटा, जब जितना एरिया ज्यादा हो जाएगा उतना ही आपके हैंड पर या शोल्डर पर जो प्रेशर लगेगा दैट विल बी लेस. टू हैव लेस प्रेशर ऑन आवर हैंड एंड आवर शोल्डर, दिस बैग्स एंड सूटकेसेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स. इवन railway tracks, these are laid on large sized wooden sleepers, wooden, iron or cemented sleepers, so that basically when their area will be large, more pressure will not be there, there will be less pressure. area ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से the ground that will not yield itself, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर ही सारे स्लीपर्स लगे होते हैं. जितना एरिया बढ़ जाएगा उतना ही प्रेशर ग्राउंड के ऊपर कम आएगा. Similarly, it is difficult to walk barefooted on road covered with edge pebbles. एज पेबल्स यानी पॉइंटेड पेबल्स. अब देखिए, अगर यहाँ रोड पर पॉइंटेड पेबल्स हैं तो जिसमें ये जितना पॉइंटेड एज होगा तो करस्पॉन्डिंगली एरिया कम हो गया. एरिया कम होने से प्रेशर उस पॉइंट पे बढ़ जाएगा. दैट मीन्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इट मीन्स इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर ये प्रेशर हमारे फीट पे लगेगा देन वी विल गेट इंजरीज. सो दैट्स व्हाई अ पर्सन कैन नॉट वॉक बेयरफुटेड ऑन द एज पेबल्स. Similarly, you can also explain it is difficult to walk barefooted on sandy surface, sand ground. Even thumb pins, all pins, these are provided with pointed ends. जो आपकी thumb pins होती हैं that are having pointed ends. Same reason. अब pointed end होगा तो हम उससे walls पे, display boards पे easily press कर पाएंगे, क्योंकि इस तरीके का कुछ structure होता है. तो जितना पॉइंटेड एंड होगा ये, तो पॉइंटेड एंड होने से एरिया कम हो गया, प्रेशर ज्यादा होगा. यानी अगर वॉल के अलोंग अगर हम डिस्प्ले बोर्ड पे अगर इसे पेस्ट करते हैं, लगाते हैं, तो उतने ही फोर्स से इट विल एक्सपीरियंस मोर प्रेशर एंड इट विल बी पुश्ड इनसाइड. So these are few examples that I have discussed. Already you know that blunt knife is better in working than that of the sharp knife is better than blunt knife. Not blunt knife. Blunt knife यानी खुरदरा knife, जैसे इसके एजेस ऐसे नहीं होते हैं. ये 9th क्लास में एग्जाम्पल थे. ये हो जाता है शार्प नाइफ, और ब्लंट होता है यानी इस तरीके का. तो जितना पॉइंटेड एंड्स होंगे उतना प्रेशर उस ऑब्जेक्ट को जिसको हम कट कर रहे हैं नाइफ की हेल्प से वो बढ़ जाएगा. जैसे एप्पल को अगर हमें कट करना है शार्प नाइफ से, इट विल बी giving you more effect. It means with the less force applied we can have cutting easily, whereas when the blunt knife will be used then you have to exert more force for it. So these are few examples. You know it, you can just go through other examples if you want to know that.
Now after this, coming to the concept that is related with the liquid. Now next is variation of pressure with depth. For which we will consider a liquid is contained in a vessel, in a container. Let the liquid having density rho, and it is in equilibrium of rest. Their liquid is there. Let me consider 2 points C and D inside the liquid at a vertical distance, vertical height of h. Now what we will do, we will imagine a right circular cylinder with these points lying on their cross section. So now we have drawn the cylinder with points C and D lying on the faces of the cylinder, and let this is having area cross section A and length of the cylinder is h. Let me take P1 and P2 be the pressure of liquid at points C and D. So P1 and P2 are the pressure at these 2 points. So correspondingly the liquid cylinder is under the action of vertical forces. तो इसके influence में क्या होगा? This force F1, this one will be equal to P1A, and this act vertically downward on this top surface. It will act like this. This will be F1 like this. Similarly, force F2. This is acting upward. This is acting upward on the lower face of the cylinder. And third, that is the weight. Weight of the liquid cylinder that is always acting vertically downward. यानी इसका complete weight जो होगा that will be mg. That will act vertically downward. Now what will be the mass? So first of all, we have just taken the various forces acting on the cylinder. Now what we have to get, we have to see the value of this mass. Now as mass of liquid, यानी ये जो हमारा imaginary cylinder है, इस region में अगर कोई liquid है तो mass of liquid in this cylinder region क्या हो जाएगा? This is volume multiplied by density. अब volume लेंगे तो area of cross section A, height h, density rho. So weight की value क्या हो गई? Weight is mg, that is A h rho g, which is acting vertically downward. As the very first condition I have taken that the liquid is in equilibrium of rest. So it is in equilibrium. So when it is in equilibrium, so it means net force on it must be 0. So it means total downward force must be balancing with the upward force. ऐसे कह सकते हैं, या net force 0. तो F1 एक कर रहा है downward और weight एक कर रहा है ये भी downward, और ये force F2 force लग रहा है upward, तो क्या होगा? minus F2. Negative sign indicate करता है opposite direction. So here now as per this equation, under equilibrium state of rest, we have got this equation. Now substitute the values. Here P1A plus AH rho G equal to P2A. I can just take it on right hand side. So here I will take this term also on this side, but I will get P2 minus P1 into A, and this is equal to AH rho G. So A से A cancel. So difference of pressure between the two ends, C और D point के corresponding pressure था P1 and P2. अब इन दोनों का difference क्या हो गया? This is equal to H rho G, यानी इतने region में जितनी height में liquid है. This shows that pressure is given by H rho G. This pressure difference is given by this. अब अगर हम ये assume करें कि C और D pressure मान लो same level पर है, अगर C और D point यानी D point भी हम इसी level पर ले लें तो क्या होगा? ये H 0 हो जाएगी. H 0 होने का मतलब P1 will be equal to P2. यानी ये तो एक result हो गया कि if we have two separate points having a height difference of H, so pressure difference is given by this one. But if C and D points lie in same level, so in that particular case height will be 0. So putting this, P2 will be equal to P1. So what we conclude, the pressure is same at all the points inside the liquid lying at the same depth. यानी हमारे पास मान लो कोई भी horizontal plane में अगर ये जितने भी points हमारे ये point लें, अगर ये horizontal level से same height पर है यानी same level हो गया तो इन दोनों पर pressure same होगा.
So this is basically variation of pressure with depth. Now one result that we will discuss, hydrostatic paradox. Basically it is again related with the liquid pressure. As now here we have shown three different containers of different shape. Here I have just shown the level of liquid to be same. In all the three containers, liquid is filled up to height h. Irrespective of the fact, their shape is different. So it is this liquid pressure at a point is independent of quantity of liquid, but it depends only upon the depth of point below the liquid surface. This is hydrostatic paradox. तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है that pressure exerted by a liquid depend only on the vertical height of the liquid column and independent of shape of the vessel containing it. So I'm writing it that what is the meaning of hydrostatic paradox. Paradox एक तरह से जैसे हम puzzle word use करते हैं कि दिखने में लग कुछ रहा है पर actual concept कुछ हो रहा है. So pressure exerted by liquid depends only on the height of liquid column and is independent of shape of containing vessel. This is hydrostatic paradox. Now next we are discussing Pascal's law. It states that if gravity effect is ignored, then pressure at every point in equilibrium of rest is same. Basically, this law accounts for principle of transmission of pressure in liquid or gases. यानी pressure का transfer दिखाते हैं. This can also be stated that increase in pressure at one point of an enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all the other points of the liquid and to the walls of container, provided gravity effect is not considered. So I can also write it in the another way. It also states that increase in pressure at one point of enclosed liquid in equilibrium of rest is transmitted equally to all the points of liquid and to walls of container. Obviously under the case when effect of gravity is ignored. So that we will prove it. For its proof, consider liquid within a container. This is all theoretical concept. So आप इसको इसमें theory वाला जो point मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, that you all I have to write. So within this we have considered 2 points C and D inside this liquid in a container. Again this liquid is considered to be at rest. Imagine a right circular cylinder with its axis like this, with its axis CD of uniform cross-sectional area A, such that again you can see this point C and D are lying on the flat surfaces of this right circular cylinder. Now see, as this is entire liquid is present, we have just imagined this cylinder. So the liquid inside this cylinder, it is in equilibrium under the action of forces exerted by the liquid. यानी ये जो liquid यहाँ बाहर की तरफ है, ये जो liquid
अंदर वाले लिक्विड पे जो फोर्स लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, सो लिक्विड इनसाइड द सिलेंडर इज इन इक्विलिब्रियम. क्यों है? बिकॉज द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द लिक्विड आउटसाइड द सिलेंडर. ये जो बाहर से जो लिक्विड फोर्स लगा रहा है वो इसको बैलेंस कर रहा है. And these force are basically everywhere. These are acting perpendicular to the surface of cylinder. And forces on the flat faces C and D. So these forces basically यहाँ पर भी perpendicular है और इस surfaces के ऊपर यहाँ पर भी ये perpendicular है. So now if we take P1 and P2 with the pressure corresponding to point C and D. यानी हमने सिंपल टर्म्स में अभी तक क्या डिस्कस किया कि लिक्विड इक्विलिब्रियम में है. हमने एक राइट सर्कुलर सिलेंडर एज्यूम किया और ये इमेजिन कर रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर जो भी लिक्विड है वो वहां पर उस पर लगने वाला फोर्स, बाहर से लगने वाला फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होकर परपेंडिकुलर है. एंड इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द surfaces, flat surfaces. So here now let me take, this is force F2 and this is force F1. So F1 and F2 are the forces acting on the flat surfaces. यहीं पर इस point को हम मेन लेंगे. So the force acting on the flat faces, this is F1 will be equal to P1A, F2 will be equal to P2A. अब देखिए लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट में है, तो F1 will be equal to F2 means P1A equal to P2A. So P1 is equal to P2. What does it mean? That pressure at point C and D are same. देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर नहीं है, लेकिन G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट, G का इफेक्ट नहीं कंसीडर किया गया. तो हमने यहाँ प्रूव किया कि दोनों पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट से फोर्स सेम होना चाहिए, जिससे प्रेशर भी सेम हो गया. जैसे अगर हम इस चीज़ को सिंपल टर्म्स में कहें कि प्रेशर डिफरेंस हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में किया था H रो G. तो अब हम क्या कह रहे थे, अगर H 0 है यानी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात है तो प्रेशर सेम है, लेकिन अगर G को भी हमने 0 कर दिया, हाइट कुछ भी हो सकती है, तब भी तो प्रेशर सेम ही आया. तो इसी पॉइंट को हमने इस पास्कल लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया. Now for its experimental proof, consider this spherical vessel with the openings. We have taken this spherical vessel having 4 cylinders. This is cylindrical tube, you can take, this is A, this is tube B, this is C and this is D. These are fitted with airtight frictionless piston and their area of cross section of the pistons are different. Like we are taking its area is A, this is having area A by 2, this is having area 2A and 3A. This is just the experimental part which I am showing. So now this fill the entire liquid with some incompressible liquid. इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि जिस पर अगर आप प्रेशर लगाएं, फोर्स लगाएं, तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स क्लोज नहीं आएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा. दैट इज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. सो व्हेन दिस वेसल इज फिल्ड विद इनकम्प्रेसिबल लिक्विड सो दैट नो एयर गैप इज लेफ्ट इनसाइड द वेसल. अब क्या होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग इफ वी अप्लाई फोर्स फ्रॉम दिस साइड, मान लो हमने यहाँ पर फोर्स इधर लगाया, तो इस पॉइंट से जो प्रेशर डेवलप हुआ वो हो गया F/A. अब होगा क्या कि जब हमने इतना प्रेशर इस पॉइंट से लगाया और लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल है, तो उसके इन्फ्लुएंस में जो ये प्रेशर यहाँ से ट्रांसफर हुआ वो इन ओपनिंग्स वाले पॉइंट्स पे जाएगी, जिसकी वजह से ये वाले जो पिस्टन्स होंगे ये सब बाहर की तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे, यानी ये जो प्रेशर है यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा. अब अगर हम ये चाहते हैं कि पिस्टन अपनी पोजीशन से नहीं मूव हो, तो यहाँ पर इन्हीं के प्रोपोर्शनेट ही फोर्स, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट. अगर हम ये फोर्स नहीं लगाते हैं तो ये प्रेशर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ये ट्रांसफर हो गया, जिसकी वजह से लिक्विड बाहर जाएगा. बट उसको सेम पोजीशन पे रखने के लिए अब यहाँ पर कितना लगाएं कि हमारा प्रेशर तो हर पॉइंट पर P होना चाहिए, तो रेशो कितना होना चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया. अब इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि प्रेशर आपके पास P ही रहे, तो फोर्स की वैल्यू हो सकती है F/2, तभी तो प्रेशर F/A के इक्वल होगा. यहाँ देखें तो यहाँ प्रेशर सेम रखने के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2F, तभी प्रेशर F/A होगा. सिमिलरली एट दिस पॉइंट अगेन यू कैन सी, सो इट मीन्स
that the pressure applied is transmitted equally to all the parts of the liquid. This proves Pascal's law. This is just experimental part to get more clarity of this Pascal's law. So this is the basic concept we have done. After this Pascal's law, we will do its application. One application I am discussing today, hydraulic lift. सबसे पहले हाइड्रोलिक लिफ्ट कहाँ यूज होती है? कार सर्विस स्टेशंस पे you can see that it is used to lift heavy loads, vehicles. Its working is based upon Pascal's law. अभी किससे बनी होती है? Here we will consider it consists of the tubes like this. This is a small arrangement I am showing here in the form of diagram. It consists of two tubes C and D of different area of cross section. देख सकते हो यहाँ पर area of cross section अलग अलग है और ये दोनों tubes connected हैं with each other with the help of pipe E. And each cylinder is provided with airless, frictionless piston. Now let me take small a is the area of cross section of tube C and capital A is the area of cross section of tube D, such that A is very small as compared to area A. Now in the next step, this whole cylinder is filled with some incompressible liquid. Again apply force F. That a downward force is applied on the piston at C. So the pressure exerted on the tube C on the liquid side, it will be force per unit area. तो अब basic concept हम क्या लेके चलेंगे कि according to Pascal's law that this pressure, this is transmitted equally to piston of tube D. यानी यहाँ पर भी सेम प्रेशर ट्रांसफर होगा. तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जब यहाँ से ये फोर्स लगा तो इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा? यहाँ प्रेशर P जनरेट हुआ. अब उस प्रेशर की वजह से यहाँ क्या होगा? दिस अपवर्ड फोर्स विल एक्ट, लेट इट बी F डैश. अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन विच विल लिफ्ट. यहाँ यानी इसके ऊपर जो भी हैवी लोड होगा वो इस प्रेशर से यहाँ पे लिफ्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर यहाँ जनरेट हुआ उतना ही प्रेशर यहाँ ट्रांसफर हो गया. तो अब यहाँ इस पॉइंट पर फोर्स कितना होगा? दिस फोर्स विल बी इक्वल टू, प्रेशर क्या होता है? फोर्स इनटू एरिया. तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दैट पिस्टन ऑफ ट्यूब डी. अब प्रेशर की वैल्यू यहां से कितनी है? फोर्स पर यूनिट एरिया. तो अब देखिए यहाँ पे ए, दिस ए इज लेस देन दिस कैपिटल ए. जब ये इससे कम है यानी डिनोमिनेटर वाला फैक्टर लेस है तो इसका मतलब फोर्स एफ डैश विल बी ग्रेटर देन एफ. सो आप देख सकते हैं कि नाउ विद द स्मॉल फोर्स अप्लाइड हियर इज सफिशिएंट एनफ टू ट्रांसमिट इक्वल प्रेशर एंड टू लिफ्ट दिस हैवी लोड. यानी इतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाया जितना ज्यादा इसको हम लिफ्ट कर पाए. सो हाउ दिस इज यूज्ड? दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस Pascal's law. So that's all for this hydraulic lift. Sometimes note can be asked on this hydraulic lift. तो उसके लिए पहले आपको डायग्राम बनाना है. थोड़ा सा आपको जो इलेबोरेशन पार्ट जो मैंने आपको लैंग्वेज में बताया है, you have to write that it consists of tube C, D joined together by tube E. These two tubes have different area of cross section such that this condition A is less than A. Then as small force is applied at this area of cross section, so the pressure generated will be this one. Now this statement is must. According to Pascal's law, pressure is transmitted equally to all the points. So from here what will be the force developed? That will be in the upward direction, and you will get that the force with which the heavy load will be lifted, that will be large under the action of small force applied. So that's all for today. Revise all the concepts thoroughly. Thank you. Have a nice day.